Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Muhammad Ali Khalid. I am a graduate of Rawalpindi Medical College and currently I'm working as a postgraduate resident in Ophthalmology Department of Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. I welcome you all to this online session organized by MedExam expert and StudyMate for FCPS Part 1 Ophthalmology candidates on the topic of cornea. तो ऑफिशियली इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न एंड द क्वेश्चंस दैट वी गेट. अच्छा, तो एफसीपीएस पार्ट 1 का जो एग्जाम होता है ना, बेसिकली ये दो पेपर्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तमाम जितनी भी हमारी जेनेरिक प्रेप होती है, इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, ये सब चीजें आ जाती हैं, उसमें से आते हैं. Whereas जो पेपर 2 होता है ना, that is more oriented and more specified towards the questions that we get from ophthalmology. अब उसमें से कितने क्वेश्चंस, टोटल 100 अगर क्वेश्चंस हैं तो उसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस ऑप्थेल्मोलॉजी रिलेटेड होंगे और कितने क्वेश्चंस जेनेरिक होंगे, इसका सीपीएसपी ने कोई किसी किस्म का प्रोपोर्शन या कोई एक रेशियो नहीं दिया हुआ. इन द पास्ट वी हैव हैड पेपर्स जिसके अंदर अप टू 80 क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन, बाकी 20 क्वेश्चन जो थे वो जेनेरिक थे. और ऐसे भी पेपर्स आए हैं जिसमें around 40 to 45 questions were from ophthalmology or eye related and the rest of the questions they were from the generic topics. तो इसलिए आपको सारी की सारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ओरिएंटेड होकर करनी है, क्योंकि यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि आपके पेपर के अंदर कितनी प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे. अच्छा, जो ऑप्थेल्मोलॉजी का जो सेक्शन होता है ना पेपर 2 के अंदर, वो बेसिकली उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आई की 5 मेजर सब टॉपिक्स से आ रहे होते हैं: ocular pharmacology, ocular pathology, ocular physiology, ocular anatomy, and finally the ocular embryology. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मेजर चंक होता है ना, यूजुअली दैट इज फ्रॉम द एनाटॉमी सेक्शन ऑफ द आई. और वो थोड़ा सा डिफरेंट भी इसलिए होता है क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी की जो एनाटॉमी होती है ना, जो हमने आई की एनाटॉमी 4th ईयर में पढ़ी होती है, वो इतनी डिटेल्ड नहीं होती जो हमारे से पार्ट 1 में एक्सपेक्ट करते हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी को मजीद डिटेल में स्टडी भी करना पड़ता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक होती है व्हिच इज दी स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी. हमें उसको स्टडी करना पड़ता है. उसमें काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, काफी डिटेल्स हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉर्निया, और कॉर्निया के अंदर भी हम मोस्टली एनाटॉमी का जो उसका एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे. सो आई थिंक वी शुड बिगिन. ओके, so talking about the general considerations, cornea is this part of the eye. ठीक है ना, हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे हैं. The cornea forms the anterior 1/6 of the eyeball, which is the outermost layer through which the light passes. It measures around 11 millimeters vertically and 12 millimeters horizontally. आपने कोशिश करना है कि इस तरह के जो स्टार्ट्स है ना, ये आपने याद करने हैं, क्योंकि पार्ट 1 के एग्जाम के अंदर इस तरह के स्टार्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं. तो आपने ट्राई करना है कि आप इनको मेमोराइज करते जाएं. So it measures 11 millimeters vertically and 12 millimeters horizontally. It is thinnest at the center, around 0.5 to 0.6 millimeters, and it is thicker at the periphery, which is around 0.7 millimeters. The radius of curvature of the anterior surface is 7.7 millimeters, whereas the radius of curvature of posterior surface is 6.9 millimeters. Radius of curvature क्या है, ये एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपने ट्राई करना है कि आप इन वैल्यूज को सिर्फ मेमोराइज कर लें. It is frequently more curved in the vertical than in the horizontal plane. और इसको आप याद कर सकते हैं एक mnemonic से, which is CV, more curved in the vertical plane. The cornea is the main structure responsible for refraction of light entering the eye, and the refractive index of the cornea is 1.37, again a high yield figure. The anterior surface of the cornea is the maximum contributor to the refractive power of the eye. This is very important. आई की जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है ना, दैट इज अराउंड 59 डायोप्टर्स. उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है ना, दैट इज ऑफ द कॉर्निया, व्हिच इज अराउंड 43 डायोप्टर्स. इट्स नॉट द लेंस बट इट्स द कॉर्निया. कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया, द कॉर्निया कंसिस्ट्स 5. हम अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ से क्लियरली एविडेंट है. द फर्स्ट लेयर इज द एपिथेलियम,
Then we have the Bowman's layer. Then we have the layer 3, that is stroma. Then we have the Decimus membrane, and finally the endothelium. अब हम इन सारी layers को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे. Layer 1, which is the epithelium. The epithelium consists of 5 layers. The superficial cells are non-keratinized stratified squamous, whereas the deepest cells, they are the columnar cells. As you can see in this picture as well, it's quite evident. At the corneoscleral junction, or the limbus, the epithelium becomes thicker, and it may contain more than 10 or more layers of cells. जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, epithelium की जो layers हैं, ये thick होती जाती हैं. Greater part of the epithelium is devoid of immunocompetent dendritic cells, which are known as the Langerhans cells. These cells may be present at the periphery only. तो ये Langerhans cells जो होते हैं, immunocompetent dendritic cells हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ periphery के ऊपर ही usually पाए जाते हैं. The electron microscopy shows that superficial most cells of the epithelium have microvilli that project into the tears. और इसका function क्या है? They assist in retaining the tear film. Conchylium epithelial cells से we have the microvilli which project into the tear film, और इनका function ये होता है कि वो tear film को adhere करते हैं ताकि वो retain रह सके. Hemidisposoms, they attach the deepest columnar cell layer to the basement membrane of the epithelium. This is a very important high yield point. हमने ये कहा है कि hemidisposomes जो हैं, they attach the deepest columnar cell layer, this layer, to the basement membrane of the epithelium. ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट करना है कि epithelium की जो basement membrane है, ये एक अलग layer है, और Bowman's layer जो है वो अलग है. इसकी significance क्या है, ये हम आगे जाकर देख लेते हैं. The basement membrane of the corneal epithelium is tightly attached to the layer 2, that is the Bowman's membrane. तो इसलिए अपने ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सेपरेट लेयर है, और दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इवेंचुअली अटैच्ड टू द बोमेन्स लेयर. लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम एक अलग लेयर कंसीडर नहीं करते. लेयर नंबर 2 इज ऑलवेज द बोमेन्स लेयर. Complete turnover of epithelial cells occurs in 7 days. Now, what are the palisades of what? At the limbus, the epithelium is thrown into the radial folds. This is the area where the new cells are formed by mitotic division, and they move from the periphery towards the center. This region is called the palisades of what? अभी हमने जब पहले भी पढ़ा था, तो हमने यही कहा था कि कॉर्निया जो है या एपिथेलियम जो है, ये सेंटर पे थिन होती है और ये पेरिफेरी पे ज्यादा थिक हो जाती है, और यही चीज, यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है. लिम्बस के ऊपर ये जो एरिया है, यहाँ पर एपिथेलियम जो होती है, इट इज थ्रोन इनटू रेडियल फोल्ड्स, और यहाँ से माइटोटिक डिवीजन होकर सेल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, जब भी कभी कॉर्निया की एपिथेलियम स्क्रैप ऑफ होती है. ठीक है, सो दिस रीजन ओवर हियर इज नोन एज द पैलिसेड्स ऑफ वोट. ओके, सो दिस is all regarding the layer 1. Now we'll talk about layer 2, that is the Bowman's layer. The Bowman's layer lies immediately beneath the basement membrane of the corneal epithelium. ये हमने डिस्कस कर लिया. Its thickness is around 8 to 12 microns. And one most important point that you have to remember regarding the Bowman's layer is that it cannot regenerate. When damaged, it is replaced by fibrous tissue. So this is the most important point that you have to remember regarding Bowman's layer, that it cannot regenerate. Coming to the layer 3, which is the substantia propria or the stroma. The stroma consists of 90% of the corneal thickness, and it mainly consists of type 1 collagen. This is important. Stroma के अंदर जो collagen है, that is of type 1. Collagen fibrils are embedded in glycosaminoglycans, which is the ground substance. Lying in between the lamellae are flattened fibroblasts. They occasionally हमें macrophages भी नजर आते हैं, lymphocytes, polymorphinuclear leukocytes. They are also seen, लेकिन occasionally. The most important point that you have to remember regarding the stroma is this point that I mentioned in the last. The corneal transparency is due to the lattice arrangement of the collagen fibrils. ये past paper का question है. Lattice arrangement क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं. देखें, ये जो हमें कॉर्निया का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये इसके कोलेजन्स हैं, और ये एक इक्वली स्पेस्ड एक पर्टिकुलर एक पैटर्न के साथ ये यहाँ पे मौजूद है. दिस इक्वली स्पेस्ड पैटर्न इज नोन एज द लैटिस अरेंजमेंट. ठीक है, जब तक ये लैटिस अरेंजमेंट कोलेजन फिब्रिल्स की मेंटेन रहेगी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहेगी और उसमें से लाइट फ्रीली पास करेगी. लेकिन जैसे ही कॉर्निया के अंदर पानी आ गया, एडिमेटस हो गई,
तो उसमें क्या होगा, ये लैटिस अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब वो डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्निया हेजी हो जाएगी, एडिमेटस हो जाएगी, और अल्टीमेटली उसको हम कहेंगे कि कॉर्निया ओपेसिटी की तरफ जा रही है। और जैसे ही ये होगा उतनी ही ज्यादा कॉर्निया फिर लाइट को ऑब्सक्योर करेगी, उसको पास नहीं होने देगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द corneal transparency, it is maintained by the lattice arrangement of the collagen fibrils. Coming to the decimus membrane, which is the layer number 4. So regarding decimus membrane, it lies posterior to the substantia propria, and it is the basement membrane of the endothelium. हमने पहले बात की थी कि एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन एक अलग लेयर है, एंड दैट इज इवेंचुअली अटैच्ड टू द बोमन्स लेयर। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डेसिमस मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द endothelium, ठीक है, which is the layer number 5. So you remember this difference. It consists of type 4 collagen, again important. Stroma के अंदर we had type 1 collagen, decimus membrane में we have type 4 collagen. What are the Hasselhood bodies? At the periphery of the cornea, there are small protrusions from the membrane, which is the decimus membrane, extending into the anterior chamber. These are called the Hasselhood bodies, and they increase with age and are considered as normal aging phenomena. यहाँ पर जब हम एंटीरियर चेंबर देखते हैं ना, दिस इज द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई, डिस्मिस मेम्ब्रेन से कुछ फोल्ड्स निकलते हैं एंड दे रेडिएट टुवर्ड्स द एंटीरियर चेंबर। इनको हम बोलते हैं हैसलहनली बॉडीज, और ये नॉर्मल एजिंग फिनोमेना होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल। सो हमने एक टर्म पढ़ी थी पैलिसेड्स ऑफ व्हाट, जो कि एपिथेलियम पे थे, और सेकंड टर्म वी हैव स्टडीड दैट इज द हैसलहनली बॉडीज। At the inner margin of the cornea, this membrane terminates abruptly and becomes continuous with the trabecular tissue on the inner wall of the canal of Schlemm. This abrupt termination or interior bordering of trabecular meshwork is known as the Schwalbe's line. इस लाइन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। आप कोशिश करें कि इस डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, बार बार देखें, तो आपकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको आई के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ याद हो जाएंगे। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखें, दिस इज द कॉर्निया, ठीक, दिस इज द कॉर्निया। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस लेयर ओवर हियर, दिस ब्लू लेयर ओवर हियर, दिस इज द डेसिमस मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं लिम्बस की तरफ, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन एब्रप्टली टर्मिनेट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिज क्रिएट हो रही है। तो दिस ridge over here that is being created when the decimus membrane is being abruptly terminated, this ridge is known as the Schwalbe's line. This is a very important landmark when we study the angle of the anterior segment. ठीक हो गया? So this is the Schwalbe's line. Last point regarding the decimus membrane, it can regenerate when damaged. It is regenerated by the endothelial cells. हमने कहा था कि Bowman's layer regenerate नहीं करती, लेकिन जो decimus layer है that can regenerate, and it is regenerated by the endothelial cells, which is the layer 5. So coming to the layer 5 of the cornea, which is the endothelium. The endothelium is a single layer of flattened cells that are polygonal in shape. Endothelium is continuous with the endothelial cells that line the spaces of the iridocorneal angle and the anterior aspect of iris. यहाँ से continue कर जाती है. The function of the endothelium, it maintains normal hydration of the cornea by barrier function, by limiting the access of water from aqueous humor to the cornea, and by active transport mechanism, which is the endothelial pump. Endothelium के basically दो major functions हैं, ये MCQ में आता भी है और पूछा भी जाता है। Excuse me. एक तो ये कि एंडोथेलियम जो होती है इट एक्ट्स एज अ बैरियर, क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर कैन डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द कॉर्निया। तो एक तो ये बैरियर फंक्शन के तौर पे काम करती है, दूसरा ये करती है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू, एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म के थ्रू, जितना भी कोई कॉर्निया के अंदर अगर कोई फ्लूइड जा रहा होता है ना, तो ये इसको पंप आउट करती है बाहर इनटू द एंटीरियर चेंबर, ठीक है। तो इसका भी रोल होता है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में, and that transparency is maintained by the active transport mechanism, which is the endothelial pump. This is a very important for the endothelium. The endothelium has 5,000 cells per millimeter square at birth, 3,000 at 40 years of age, and less than 500 cause the corneal edema. जैसे जैसे endothelial की जो concentration है वो कम हो जाएगी endothelium की,
तो एंडोथेलियल पंप का मैकेनिज्म खराब होता जाएगा और उतना ही फ्लूइड जो है वो कॉर्निया के अंदर पेनिट्रेट करता चला जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर. Coming to the blood supply and lymphatics, the cornea is devoid of lymphatics and blood supply. This is very important. At the periphery of the cornea, there lies a network of capillary blood vessels originating from the anterior ciliary arteries. You have to remember this. The cornea is nourished from diffusion from aqueous humor and from these capillaries at its edge. So diffusion के through from the aqueous humor और anterior ciliary arteries जो periphery पर located है वहां से इसको nourishment मिलती है. The cornea receives oxygen at the center directly from the atmosphere dissolved in the tear film. Cornea की जो oxygen की source है ना that उसमें जो सबसे best source है ना उसकी that is always going to be atmosphere. ठीक है? तो अगर आपको इस तरह का कोई MCQ आए तो उसमें you always have to select directly from the atmosphere. And it receives oxygen peripherally via diffusion from the capillaries. But again, atmosphere is the major supply of oxygen to the cornea. Coming to the nerve supply, the cornea is supplied by the long ciliary nerves. इसमें आपको पूरा पाथवे याद होना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी जो नर्व है ये लिखी हुई आ सकती है. Long ciliary, which is the branch of the nasociliary, which is the branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. तो आपको ये पूरा पाथवे याद होना चाहिए. Axons of these nerves in cornea are naked or unmyelinated and devoid of Schwann cells, again a high yield point. And these axons are sensitive to pain and cold. ये दो sensations हैं जिससे sensitive होते हैं. So you have to remember this. Coming to certain other high yield points. Central optical zone, ये क्या होता है? This is the central region of the cornea, 3 to 4 millimeters in diameter, which overlies the pupil of the eye and responsible for formation of image on the foveal part of the retina. Cornea का बिल्कुल central zone जहां से light cross करती है और eventually it falls into the fovea, जो कि आपका एक sensitive तरीन portion होता है retina का for the formation of central vision. ठीक है? So this is the central optical zone, quite easy. Arcus senilis, ये क्या चीज है? These are white arcs superiorly and inferiorly, almost always separated from the limbus by an interval of 1 millimeter. They occur because of infiltration of lipid. ये एक normal एक aging phenomena है और कभी-कभार ये भी indicate करते हैं कि hyperlipidemia को भी indicate कर रहे होते हैं कभी-कभार, लेकिन normally as we age आर्कस सेनालिस डेवलप होता है और कॉर्निया के अंदर लिपिड इनफिल्ट्रेट करता है और इसकी एक जो एक तरह से कह लें कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है वो ये होता है कि it is always separated from the limbus by an interval of 1 millimeter. So this is the arcus senilis. Fuchs dystrophy. This is a disease in which the endothelium layer of the cornea dies off. अब जब एंडोथेलियम नहीं होगी तो क्या होगा? As we discussed, एंडोथेलियम पंप का मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाएगा और एंडोथेलियम पंप का जो मकसद था वो था ही है कि उसने कॉर्निया को क्लियर रखना था. उसने एक्टिव में ट्रांसपोर्ट के थ्रू कॉर्निया से फ्लूइड को बाहर निकालना था. लेकिन जिस तरह से एंडोथेलियल सेल्स खराब होते जाएंगे, फ्लूइड जितना भी है वो बिल्डअप होता जाएगा कॉर्निया के अंदर और विजन पेशेंट का हेजी होता चला जाएगा. सो फ्यूक्स डिस्ट्रॉफी इज अ डिजीज ऑफ द एंडोथेलियल लेयर ऑफ द कॉर्निया. इसमें एंडोथेलियम खराब हो जाती है. Okay, so these were the high yield points. Now we'll discuss some of the past paper MCQs that have been asked regarding cornea in the past. Regarding corneal reflex afferent, ophthalmic branch of the trigeminal nerve, यही पूरा pathway देखा था और यही पूछा गया था, ये हमने पढ़ लिया. Sensory supply of the cornea is nasociliary nerve. Again, I said कि आगे इसमें से कोई भी जगह पूछ सकते हैं, तो आपको long ciliary, branch of nasociliary, branch of ophthalmic division of trigeminal, ये आपको सारा याद होना चाहिए. The corneal epithelium lies on the Bowman's membrane. भी हमने देख लिया. Bowman's membrane cannot regenerate. हमने ये distinguish किया था कि Bowman's membrane regenerate नहीं करती, whereas the Decime's membrane can regenerate. The corneal transparency is because of the lattice arrangement of the collagen fibrils. ये भी हमने पढ़ लिया. The Decime's membrane consists of type 4 collagen और stroma में हमने कहा था कि stroma had type 1 collagen. True regarding cornea, the Decime's membrane is the basement membrane of the endothelium. Again, ये मैं बार-बार stress कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जा चुका है multiple times. Decime's membrane जो है वो basement membrane होती है endothelium की, whereas the basement membrane of the epithelium is a separate layer, which is attached to the layer number 2, that is the Bowman's layer. Excuse me. Regarding the endothelium, the corneal transparency is maintained by the endothelial pump. Again, ये भी हमने discuss कर लिया. Corneal transparency is maintained by intact endothelium. Again, repetition.
The corneal source of energy pathway is glycolysis. हमने इसको डिस्कस नहीं किया था लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, तो you can remember कि जो corneal source of energy pathway है, that is the glycolysis. Source of oxygen for cornea in a 1-year-old child is atmosphere. ये हमने डिस्कस किया कि atmosphere is always going to be the better option जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं regarding cornea. Fuchs dystrophy occurs in the endothelium. It's a disease of the endothelium. Endothelium खराब होती है, fluid build up कर जाता है cornea में और cornea hazy हो जाती है. Regarding cornea, it has 523 to 530 microns, about 0.5 millimeters. हमने कहा था कि centrally the cornea is around, it measures around 0.5 millimeter thick, और periphery के ऊपर it's around 0.7 millimeters, और periphery के ऊपर cornea थोड़ी thick हो जाती है. Corneal detergescence is by endothelium. Detergescence का भी मतलब वही होता है कि actively cornea को clear रखना, ठीक है? And that is maintained by the endothelium. Regarding the epithelium, it is stratified squamous non-keratinized, ये भी हमने पढ़ लिया. And corneal edema, it occurs when there is injury to the endothelium, which can occur during the procedure, which is the phacoemulsification, जो हम cataract के लिए perform करते हैं. So this was all. If you guys have any question, if you guys have any queries, feel free to ask. Okay, so these are the courses that we are offering for November 2022. Medicine Allied, Surgery and Allied, Diagnostic Radiology, Gynae Obs and Ophthalmology, ENT and Dentistry. हमारे लेक्चर्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है जिसके अंदर हम पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद एंड के ऊपर हम जो पास पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए. The course format includes discussion on basic topics, live sessions, discussion of golden files, mock exams, practice MCQs, and one-on-one access to the mentors. These are the mentors. These are some of the books that have been published by Dr. Hemidisposoms in collaboration with the med-exam expert. Thank you very much, everyone. Kindly do give some feedback. और अगर आपको इसके अलावा भी कोई किसी किस्म की क्वेरी हो तो try posting it below the video. Inshallah, I'll try to answer it. Thank you so much.